Hello students and welcome to the next session on vocabulary building. Till now we have covered a lot on root words. We have seen some of the questions which are there in the management exams as well. We have talked about picture vocabulary as well. So we are basically slowly and gradually we are building on our vocabulary, and I hope, as I have mentioned in my first video, that you guys must be reading and also working hard for vocabulary building. और मैं हमेशा से बोल रहा हूं और आज भी मैं इस चीज को रिटेरिएट करूंगा that these are the lectures just to ensure, just to help you out that how you need to build your vocabulary. These are not the 100% guarantee that words will come from these lectures only, because sky is the limit when we talk about vocabulary and so as GK. So we are not sure kahan se word aayega, but I am just giving you the idea how to develop the vocabulary. With this, I want to start my session, which is root word session 3 on vocabulary building. Let's start. So the first root word which I want to take today is the word psyche, right? Nowadays, when we are talking about lockdowns, when we are talking about we are kind of quarantined or isolated at home, we are talking about phobias creating anxiety are coming up. That's very important, and in the newspaper daily basis पे आपको ये word देखने को मिल जाता है that we should not be ashamed, we should talk with our family members, with our friends. This is not a taboo anymore. So what is this psyche is all about, right? ये है क्या psyche? Psyche is something when you are understanding the brain, understanding about the individual. That's the word psyche is all about, right? Let's see some of the words related to psyche. The first word here is, sorry for that. So the first word here is psychiatrist. यहाँ पर पहला word जो हम ले रहे हैं that is psychiatrist. अब let's say if I'm talking about psychiatrist, मैं फटाफट एक बार 4 words आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर. These are the 4 words in which students generally kind of get confused, right? क्या है इनमें difference? Let's first of all take the difference between a psychiatrist and a psychotherapist. What exactly is the difference? In psyche as a science, or let's say in psychopathy, पूरी अगर मैं psychopathy as a science ले लूं, ठीक है, इसके अंदर psychiatrist is the only individual who can prescribe medicine. He is the individual who can prescribe medicine, right? Which means what? Which means psychologist or for that matter psychotherapist, he can just give the therapy. A psychotherapist, he can just give a therapy, right? वो थेरेपी दे सकता है, बट ये आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता. He won't be able to prescribe the medicine. Psychiatrist is the only guy who can prescribe the medicine to you guys. Then is psychologist and psychopathy. Psychopathy is the science dealing with psyche of an individual or the mental makeup of that individual. How that individual is basically उसका mental makeup क्या है उस time, वो mentally कितना strong है, कितना weak है, what's going on, ये पूरा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? Psychopathy पे. If someone has an anxiety related disorder, if someone has a stress related disorder, ये सारी चीजें कौन पढ़ते हैं हम लोग? Psychopathy में. And psychologist, someone who studies about psychopathy is a psychologist. A psychologist के अंदर you can be a psychiatrist, you can be a psychotherapist. आप इसके अंदर ये सारी अलग अलग चीजों को सिलेक्ट करते हो. So these are the 4 words related to the word psyche. I thought you should know this, and that's why I came up with this particular slide. Next is entomology. What is entomology? What exactly is this? लॉजी का सर मतलब हमें पता है, आप काफी बार बता चुके हो. लॉजी का मतलब होता है स्टडी. एंटोमोस, ये ग्रीक वर्ड एंटोमोस से आया है, which means removal. एंटोमोस का मतलब क्या होता है? रिमूवल. So removal of something is a entomology. Let's see some of the common entomology which we use, or some of the common word which we see on a daily basis. The first is tonsillectomy. कई बार हम लोग ड्यू टू टॉन्सिल्स हम लोग बोलते हैं हमारे टॉन्सिल्स हो गए. भैया टॉन्सिल्स हमेशा से ही होते हैं.
टॉन्सिल्स हमेशा से ही होते हैं, अगर आपके टॉन्सिल्स नहीं होंगे तो आप शायद बोल नहीं पाएंगे। सो टॉन्सिल्स आपके हमेशा से ही होते हैं। सो टॉन्सिल्स अगर बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं टॉन्सिल्स हो गए, राइट। एंड समटाइम्स दिस इन्फेक्शन गेट्स सो सीवियर दैट वी हैव टू रिमूव द टॉन्सिल्स, एंड दैट्स वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टॉन्सिलेक्टोमी, व्हिच मींस नथिंग बट removal of tonsils is known as tonsillectomy. Removal of tonsils is known as tonsillectomy. Second is appendectomy, and this is a very common ectomy which we do, which takes place, right? That is what? Removal of appendix. अब ये है क्या अपेंडिक्स? अपेंडिक्स बेसिकली एक एक्स्ट्रा बोन है। अपेंडिक्स आपके एक एक्स्ट्रा बोन है, ये एक्स्ट्रा बोन आपके वेस्ट के नीचे होता है, राइट। एंड ये एक्स्ट्रा बोन बेसिकली, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग इवॉल्व हुए हैं थ्रू आउट द ईयर्स, तो ये एक बोन है जो एक्स्ट्रा बोन है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ये पेन करने लग जाता है सडनली, तब इसका रिमूवल करना पड़ता है। द रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड एज अपेंडेक्टोमी। Next is mastectomy, right? And again, these days when we are talking a lot of time we are talking about breast cancer, mastectomy is removal of breast tissues. This is nothing but removal of breast tissues. हम लोग ब्रेस्ट कैंसर्स लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा सुनते हैं, और जब उस कैंसर को क्योर करने की बारी आती है, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट यू शुड डू मैस्टेक्टोमी। आप ब्रेस्ट टिश्यूज को रिमूव कर दो, इट विल हेल्प यू इट विल हेल्प टू क्योर ब्रेस्ट कैंसर। द नेक्स्ट इज हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी बेसिकली क्या होता है? इट इज रिमूवल ऑफ यूटेरस। It is removal of uterus, again a very common in the ladies, basically 40 to 50 की एज में। uterus basically means removal of womb, right? आप उसके बाद कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। So removal of womb or uterus is basically hysterectomy. So these are the words basically related to the word ectomy or entomology. We talked about tonsils, we talked about appendix, ब्रेस्ट एंड वूम, और ऐसे काफी सारे एंटोक्टोमी हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। क्रेसी, नहीं, ये क्रेजी नहीं है, ये है क्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या? क्रेसी का मतलब होता है टू गवर्न और टू रूल। हमें सर एक ही क्रेसी पता है, और वो है, यस सर आपने सही बोला, डेमोक्रेसी। We the people, by the people, for the people। हमें सिर्फ एक यही डेमोक्रेसी के बारे में पता है। So क्रेसी के मतलब होता है to govern or to rule। Let's see some of the words related to क्रेसी। The first on the list is kleptocracy। आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, in fact, because I remember one of my friend in my school, he was kleptomaniac in nature, right? He was kleptomaniac in nature। What exactly do you mean by the word kleptomaniac? Kleptomania का मतलब होता है चोरी करने का पागलपन। Kleptomania का मतलब क्या होता है? चोरी करने का पागलपन। They are crazy about stealing things. They are crazy about stealing things. ऐसा नहीं है कि उनके घर के अंदर जरूरत है या फिर they are poor, they are impoverished, but the only thing is that they have this habit of stealing things. Even if they are rich, doesn't matter at all, right? So one of my friend which I'm talking about, he had this habit of stealing stationery items. Whenever he used to see the stationery items in the friend's bag, or let's say a colleague bag, or let's say in a stationery shop, he had that mania for stealing things. So that's kleptomania। वहीं से वर्ड आया है kleptocracy। सर क्रेसी का वर्ड आपने बता दिया है, which means to govern or to rule, और klepto आप बात कर रहे हैं चोरी के बारे में। क्या ये चोरी के रूल की बात हो रही है? क्या चोर जब रूल करें उसको क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं? क्लेप्टोक्रेसी बोला जाता है अ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय करप्ट इंडिविजुअल्स, और जो करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लेप्टोक्रेसी। गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय करप्ट इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय करप्ट इंडिविजुअल्स, इनको हम लोग बोलते हैं
kleptocracy. That's the word kleptocracy is all about. The next is mobocracy. The next word is mobocracy. क्रेसी का वर्ड आपने सर हमें बता दिया है, which means to rule. मोब आपने कई बार सुना होगा, mob lynching. An incident of mob lynching happened in Uttar Pradesh, right? When some of the people from X community was taking the cow to this thing. So what is this mob lynching, right? लोग जब किसी को मार देते हैं, लिंच कर देते हैं, that is mob lynching. MOB, mob मतलब लोग. So government which is ruled by few individuals, a government which is ruled by few individuals, उसको हम लोग बोलते हैं mobocracy. A government which is ruled by few individuals, उसको हम लोग बोलते हैं mobocracy. Third is neocracy. The word neo basically stands for new. The word neo basically stands for new. यहां मैं डाल देता हूं people. So the word neo basically stands for new. So government which is ruled by inexperienced people. Government which is ruled by inexperienced people is known as neocracy. So for example, when our government came for the first time, when Mr. Arvind Kejriwal was a chief minister, first time when he take that, chief minister chair in Delhi, that time it was a neocratic form of a government. Abhi nahi bol sakte, abhi they are well experienced. Earlier there was a neocratic form of a government, right? The next is gynocracy. I have talked about the word gyne, which means women. हम लोग गायनी के बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, which means women. So government which is ruled by women, government which is ruled by women or ruled by females is known as gynocracy, right? Next is autocracy. ऑटो सर रिक्शा नहीं, ऑटो का मतलब है सेल्फ. ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ. अ सेल्फ imposed rule is autocracy. A self-imposed rule is autocracy. Self-imposed rule is known as autocracy, जिसको आप dictatorship भी बोलते हैं. That's the word autocracy is all about. Theocracy. सर थियो आपने बताया था मतलब भगवान, राइट? सर वो गवर्नमेंट जो भगवान चलाते हैं, भगवान के घर में भी गवर्नमेंट है? नो. थियोक्रेसी इज द गवर्नमेंट which is run on the basis of religious principle or text. Government which is run on the basis of religious text or principle, is known as theocracy. When bishops run the government, when we are talking about Islamic religion, these are what? This is a theocratic form of a government. The next on the list is plutocracy. Sir, प्लूटो आएंगे? प्लूटो से लोग आएंगे? नहीं, ये वो वाला प्लूटो नहीं है. Plutocracy is the government which is ruled by rich individuals. Government which is ruled by rich individuals is known as plutocracy. Government which is ruled by rich individuals is known as plutocracy. The next is aristocracy. Sir, aristocrat वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. Aristocracy is government which is ruled by noble people, which is ruled by noble families, purani famous families, something like England basically, something like UK. ये लोग जो हैं अगर रूल कर रहे हैं वहां पर aristocrat kind of a government है, aristocracy kind of a government है. The next is gerontocracy. It is gerontocracy. Gerontocracy का मतलब क्या होता है? Government which is ruled by बूढ़ा लोग, government which is ruled by old people. अगर बूढ़े लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं gerontocracy, because the word geront
The word gerund basically means what? Old people, sir. The word gerund basically means old people. राइट सर, हमने तो सिर्फ डेमोक्रेसी सुना था और वो अब आप लेके आए हैं. डेमोक्रेसी हमें पता है सर, ये आपने कुछ अच्छी बात करी. डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय पीपल. Government which is ruled by people, for the people, by the people, to the people is democracy. And then is meritocracy. Government which is ruled on the basis of meritorious people. Government which is ruled by meritorious. मेरिट के आधार पर लोग अगर सिलेक्ट हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं meritocracy. Government which is ruled by meritorious people. Government which is ruled by mediocres, ना ज्यादा इंटेलिजेंट ना ज्यादा ग्रेट, उसको हम लोग बोलते हैं mediocracy. The word is bureaucracy. Government which is ruled by top officials is bureaucracy. So these are the words which are related to क्रेसी. और हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक वर्ड पढ़ा था कैकिस्टोक्रेसी. कैकिस्टोक्रेसी मतलब लीस्ट कैपेबल इंडिविजुअल्स अगर गवर्नमेंट रन कर रहे हैं तो इट इज अ कैकिस्टोक्रेसी काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट. सो दीज आर ऑल द क्रेसीज which you need to know, which you need to understand. आप जितना ज्यादा इसमें फोकस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्रेसी से देखेंगे, आपको और वर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे. And that's what the root word is all about, right? Next talk about is MB. MB का मतलब क्या होता है? MB का मतलब होता है around. MB का मतलब क्या होता है? around. MB का एक और मतलब भी होता है. MB का एक और मतलब होता है both. सर ये दो मीनिंग क्यों आ रहे हैं? ये दो मीनिंग इसलिए आ रहे हैं बिकॉज जैसा कि हमने बोला था, अंग्रेजी भाषा काफी भाषाओं का संगम है, हर जगह से वर्ड्स आते चले गए. सो देयर आर सम ऑफ द वर्ड्स व्हिच विल टेक टू मीनिंग्स एज वेल. सो यहां पर दो मीनिंग है व्हिच इज अराउंड एंड बोथ. लेट्स सी सम ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू एमबी. द फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज एमबी प्योर. सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? रियली यस, वो जो कार परफ्यूम एमबी प्योर आता है, कहीं तो लॉजिक होगा उसका. मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं तो उसका लॉजिक होगा. प्योर, यस, प्योर इज प्योर, पवित्र. एमबी फ्रॉम ऑल अराउंड, वो चीज जो आपकी कार को पूरी हर तरीके से पवित्र कर दे, प्योर कर दे, दैट्स द वर्ड एमबी प्योर इज ऑल अबाउट. सो एमबी प्योर इज नथिंग बट प्योर फ्रॉम ऑल अराउंड. Pure from all around is MB pure. Right? Let's go to the next word. Next is ambivalent. Right? सारे साइंस स्टूडेंट्स को बचपन याद आ गया होगा. राइट? एम्बीवेलेंट हम बात करते थे. एम्बीवेलेंट एलिमेंट. राइट? व्हाट इज दिस एम्बीवेलेंट? एन एलिमेंट विच हैव टू वैलेंसीज. बाकी लोग ज्यादा ध्यान मत दें, बस पढ़ लें. एम्बीवेलेंट क्या होते थे? एन एलिमेंट विद टू वैलेंसीज, जिसकी दो वैलेंसी होती हैं, उसको हम लोग बोलते थे एम्बीवेलेंट. राइट? दैट्स द वर्ड, दैट्स हाउ दोज वर्ड एम्बीवेलेंट वाज ऑल अबाउट. एम्बिशन. सर एम्बिशन का मतलब तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी. Ambition. I want to do this. I want to do. My ambition is to ride into a Mercedes. My ambition is to to be the richest person in the world. My ambition is to be the richest philanthropist in the world. What is this ambition? And how it is related to both or even around. Ambition का मीनिंग ठीक है, हम लोग अभी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इस तरीके से यूज करने लग गए हैं. एम्बिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता था? इट्स दैट फीलिंग टू मूव ऑल अराउंड. It's that feeling to move all around is the word ambition is taking. और वहीं से word आया है that my ambition, my wish is to do this. My wish is to do what? So that's my feeling to do whatever I want. That's the word ambition is all about. The next is ambidextrous. The next is ambidextrous. The word dexterous. याद करो वो पुराना वीडियो. सर वही याद होता तो हम आज कुछ का कुछ कर चुके होते. याद करो वो पुराना वीडियो जो तुमने देखा था. द वर्ड dexterous basically means skillful. The word dexterous basically means skillful. और MB का मतलब होता है both. Someone who is skillful from both hands. Someone who is
skillful from both hands. और मैंने तब भी एग्जांपल दिया था आपको 3 इडियट के वायरस अंकल का. So someone who is skillful from both the hands is ambidextrous, जो दोनों हाथ से लिख सके या दोनों हाथ से skillful हो सके is a ambidextrous. Ambiguity, ambiguity, ये करूं या वो करूं, राइट? कैट करूं या जीमेट करूं, there is a ambiguity. Z भरूं या नहीं भरूं, there is a ambiguity. So ambiguity का मतलब when you are confused, when you are confused. और आप confused कैसे होते हैं? दो ऑप्शंस के बीच में. When you are confused between two, when you are confused between two things, that's the word ambiguity is all about. कहां से आ रहा है? both से. Ambidextrous कहां से आ रहा है? both से. एम्बियंस कहां से आ रहा है? एम्बिशन कहां से आ रहा है? अराउंड से. और क्योंकि मैंने एक और वर्ड बोला है तो उसको भी देख लेते हैं. द वर्ड इज एम्बियंस, जिसको आप ऑम्बियंस बोलते हो. द वर्ड इज ऑम्बियंस, राइट? व्हाट इज दिस ऑम्बियंस? हम बोलते हैं ना इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस इज नॉट गुड, इस द क्लासरूम का एम्बियंस इज नॉट गुड. सो व्हाट इज दिस एम्बियंस ऑल अबाउट? इट्स नथिंग बट सराउंडिंग. कहां से आया है? अराउंड से. The word ambience is nothing but surrounding. Guys, I hope you must be pausing the video, noting down the words, not taking the screenshot. Taking the screenshot is a crime. You should not do that because otherwise आपको words कभी भी याद नहीं होंगे, right? Otherwise it was very easy for me to even write, have these words on my PPT as well, so that I don't have to write with pen. I'm just writing it so that I can go slow and you can also remember the words properly. The next is you. The next is EU, right? You basically as a root word again, इसका मतलब होता है good. The root word you basically means good. Let's see some of the words. The first word on the list is eupeptic, right? Whenever your gut is not great. Gut मतलब sir guts तो बहुत है. Gut मतलब we are talking about आपका पाचन शक्ति, your digestive system. Yeah, when let's say your gut is not that great, right? So doctor advise you to get eupeptic. The doctor advise you to get eupeptic medicine. What is this eupeptic? What is this eupeptic? So आपकी gut के अंदर, आपके intestine के अंदर, जहां आपका पूरा एकदम digestive system work करता है, there you have pepsin enzymes. वहां आपके enzymes होते हैं pepsin enzymes. और ये pepsin enzymes basically helps you in digestion. These pepsin enzymes helps you in digestion. अब ये पेप्सिन एंजाइम जो आपके डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, वहां कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती है, if there is some problem there, then doctor advise you to get some eupeptic medicines, which is good for digestion. Eupeptic medicine क्या होती है? Which is good for digestion. So when you take that that pink color liquid Digene, that's what? That's a eupeptic medicine. That's a eupeptic medicine, OTC medicine, over-the-counter medicine. Okay, so something which is good for digestion. Next is eulogy. Sir, logy का मतलब होता है study, you का मतलब होता है good. Good study, ऐसा भी कुछ होता है? Yes, ऐसा भी कुछ होता है. Let's see what is this eulogy is all about. So what is this eulogy? Right? Let's see. So logy का मतलब हम बोल रहे हैं study. You का मतलब बोल रहे हैं good. So what is this good study? Let's see, right? So eulogy basically a speech or a piece of writing, a speech or a piece of writing written for a person after his or her death. After his or her death, उसको हम लोग बोलते हैं eulogy. It's generally written for a person after death. That's what the eulogy is all about. Encomium जिसको बोलते हैं. The word is encomium, right? Next is euthanasia. What is the word euthanasia is all about? What is this euthanasia? Euthanasia basically means a good death, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं mercy killing. A good death or a mercy killing is the word for, is the the meaning of the word euthanasia. So in India we have passive euthanasia. In India we have passive
euthanasia. We don't allow active euthanasia. What is this active, passive euthanasia is all about? When someone is suffering from a terminal illness. What is this terminal illness? Which means अगर डॉक्टर्स बोल दें कि ये कभी भी सही नहीं हो सकते, if someone is suffering from a terminal illness, so at that point of time a patient can request for a euthanasia. In foreign countries it is allowed. In India this case was basically brought forward. अगर आपने मूवी देखी हो गुजारिश of ऋतिक रोशन and ऐश्वर्या राय, again and again there was a nurse named Aruna. She was raped and her condition was such that in the hospital she was raped in Mumbai, and her condition was such that she was bedridden for 20 plus years. Again and again request went to the court, Supreme Court तक बात किया कि euthanasia दे दो, इसको मार दिया जाए, but eventually she died. And in India we are now talking about passive euthanasia. It's not an active euthanasia, because government is of the opinion if we do active euthanasia, if we approve of active euthanasia, then people will start killing for their own benefits. So in passive euthanasia, the acceptance of that patient is also required to get into that. So that's what the passive euthanasia is all about. Euphoria, not the band I'm talking about, but that band also has this context, this meaning in context. Euphoria is a good state of mind. Good state of mind, or I would say the state of extreme happiness. The state of extreme happiness, that's the word euphoria is all about. State of extreme happiness, or when you are happy, that's the word euphoria is all about, right? Let's move further. थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है words. Okay, the word is euphony. What is euphony? We have talked about this if you guys remember. Euphony is a good sound. What do you mean by the word euphony? You मतलब होता है good और phony का मतलब सर होता है sound. A good sound is known as euphony. And if you remember, we have talked about the bad sound as well, which means noise, a cacophony. The antonym of euphony can be cacophony, which means a bad sound is a cacophony. The next and the last on the list is, oh wow, the same word again, euphony, sorry for that. Okay, so these are the words related to EU, which means good. We are talking about eupeptic, eulogy, euthanasia, euphoria, euphony. So these सारे words बने हुए हैं आपके EU, which means good, right? Let's move to the next. EU के बीच में हमने एक लेटर और डाल दिया और वर्ड बन गया डिफरेंट. We are talking about EQ. हमने पहले U पढ़ा, हम पढ़े EQ, and as the word suggests, EQU means equal. There is nothing great to know in this word. हमें पता है इसका मतलब. EQU का word कहां से आया है? Equals से. Let's see the words related to EQU. The first is equator. Yes sir, हमने पढ़ा है. A line, an imaginary line which divides the earth into two equal halves. और हम टीचर से लड़ाई करने चले जाते थे, मैम इक्वल ही तो नहीं लिखा आपने, नंबर काट लिए. अगर आपने इक्वल नहीं लिखा तो वो इक्वेटर नहीं है. An imaginary line which divides the earth into two equal halves. Which divides the earth into two equal halves is known as equator. Is known as equator. The next is inequity, and the next is inequity. The next is equilibrium. Now let's see what is the difference between inequity and inequity. हालांकि ये word equity से related नहीं है, ये word equal से related नहीं है, but I thought you should know the difference as well. The word inequity, हम लोग equity भी बोलते हैं, आएगा कहीं ना कहीं आगे. So हम लोग बोलते हैं equity shares. We talk about equity shares, right? What are those equity shares? वो equity shares क्या है? They are equal for everyone. वो इक्विटी शेयर जैसे आपके लिए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए हैं, जैसे प्रेसिडेंट के लिए हैं, वैसे मेरे लिए हैं, तो वो इक्वल है सबके लिए. सो इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस करना, राइट? इक्वल, जस्टिस करना. और इनइक्विटी का मतलब क्या होता है? अनजस्टिस, राइट? इनइक्विटी का मतलब क्या होगा? द इनइक्विटी का मतलब होगा इनजस्टिस. क्विकली, जस्ट अ मिनट. या
So iniquity का मतलब क्या होगा? It is injustice. That's the word iniquity is all about, which means not equal. Which means not equal. Okay. The next is iniquity. Now iniquity, as I said, nothing related to EQU. इसका मतलब क्या होता है? Wickedness. And मतलब शरारतीपन. Right? Wickedness मतलब कि शरारतीपन. And why I am mentioning this word here? Because you should not be confused between these two words. Right? So here the difference is of E and I. So I thought you should know this word as well. Equilibrium. The word is equilibrium next. What do you mean by the word equilibrium? Which means equal on both the sides. Right? Librum. Librum. ये word कहाँ से आया है? Libra. ये word कहाँ से आया है? Libra. Which is the seventh zodiac sign. Which is the seventh zodiac sign. वहां से word आया है Libra. Right? तराजू, तुला राशि जिसको हम लोग बोलते हैं. So something which is equal. Something which is equal on both sides is equilibrium. It is equilibrium. The next is equanimity. EQU, equal. Equanimity. Equanimity. So there is an equal enmity between two people is known as equanimity. Right? That is known as equanimity. Equal enmity between two people. Equinox. The word nox basically stands for night. The word nox basically stands for night. So what is this word equinox is all about? The dates where days and nights are equal. Right? Though they are the dates where days and nights are equal. दो दिन होते हैं 365 days के अंदर. One is in June and one is in September if I'm not wrong. Where days and nights are equal. ये दो दिन जहां पर दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है इक्विनॉक्स. The next is equity. I have talked about this. Justice. Equity is nothing but justice. Equilibrist. Someone, IST, a follower of equilibrium. What is this equilibrist? A follower of equilibrium is equilibrist. Now, what is this follower all about? हालांकि इसका जब एक्चुअल वर्ड देखोगे, द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट, बट इसका एक्चुअल वर्ड देखोगे, अ पर्सन हु कैन वॉक ऑन अ थिन टाइट रोप. फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा हो आपके कोने मतलब इन सोसाइटीज और लेट्स से इन योर विलेज और इन योर सिटी, वो एक छोटा सा बच्चा एक रोप के अंदर अपना बैलेंस मेंटेन करके रखता है, उसको बोल सकते हो आप इक्विलिब्रिस्ट. Right? So that's the word equilibrist. A follower of equilibrium is equilibrist. So these are all the words related to EQU. There are many more words like this, right? And as I said, you need to develop the vocabulary. I am giving you the logic. I am giving you the explanation that how you can develop your vocabulary, right? Let's go to the next. Malus and bene. I think I have talked about it. Quickly, let's talk about the word malus and bene. The word malus basically means bad. The word bene basically means good. आपने बोला सुना होगा ना, बेनिफिशियरी, जो पापा हमें कभी भी नहीं बनाते हैं अकाउंट में, राइट? पता है, पता नहीं क्या क्या कर लेगा ये. हाँ, सो बेनिफिशियरी मतलब क्या, क्यों बनाया जाता है? हम बोलते हैं ना, आपका बेनिफिशियरी कौन है, मतलब आपके बाद इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इन अ गुड सेंस. That is how the word is coming, beneficiary. और ये वर्ड कहां से आया है? bene से, malus से. Right? What are these words? Benediction. अगर malediction, अगर आपने लॉकडाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से लॉकडाउन का फायदा लिया है, तो फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर हम सारे एक्साइटेड थे रामायण, महाभारत, गीता, ये सब कुछ देखने के लिए. और वहां पर दो वर्ड जो कि पेट थे, हर एपिसोड में देखने को मिल जाते थे. मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं या मैं तुम्हें वरदान देता हूं. ये अभिशाप और वरदान यही है. सो अगली बार अगर जब वो आए, जैसे वो बेनेडिक्शन आए, तो उसका मतलब क्या होता है? वरदान देना. बेटा मैं तुम्हें बेनेडिक्शन देता हूं, ब्लेसिंग देता हूं, और अभिशाप देता हूं मतलब मैं तुम्हें कर्स देता हूं. सो ये सारे कंस नहीं, कर्स. सो बेनेडिक्शन एंड बेनेडिक्शन आर ब्लेसिंग एंड कर्स. वर्ड कहां से आए हैं? बैड और गुड से. The next is malign. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब हमने टोन्स का लेक्चर किया था, that malign मतलब bad, something which is bad in nature is malign.
Don't malign my image in front of the students as it will hamper my personality. So malign का मतलब क्या होता है? गिरा देना किसी को. Beneficiary मैंने बता दिया. Maleficent, something which is bad in nature. Something which is bad in nature is maleficent. Benedictory, again benedictory का मतलब क्या होगा? Something which is good in nature. Benedictory, something which is good in nature is benedictory. Next is benign. ये ट्यूमर benign है या malign है? ये ट्यूमर benign है या malign है? अगर मेलाइन है तो वो कैंसर होगा, अगर बेनाइन है तो मतलब घबराने की कोई बात नहीं है. डॉक्टर हमारे सामने ऐसे वर्ड यूज करते हैं, बेनाइन, मेलाइन. सो ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं मेलस या बेने से. क्विकली इन योर नोटबुक नाउ, पॉज द वीडियो एंड क्विकली राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर नोटबुक. Okay, let's move further. The word is circum. गोल गोल गोल, right? ये दुनिया बड़ी गोल है, ये दुनिया बड़ी सरकम जैसी है. सरकम का मतलब क्या होता है? टू मूव अराउंड. टू मूव अराउंड इज सरकम, राइट? यस सर, हमने पढ़ा है सरकमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r. ये याद करते करते सर काफी टाइम हो गया. सो व्हाट इज दिस सरकम? सरकम से बनने वाले वर्ड, हियर वी गो. सरकमफेरेंस. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सरकम? सरकम का मतलब होता है अराउंड. सरकम का मतलब होता है अराउंड. फेरेंस वर्ड आया है फेरी से. फेरेंस वर्ड आया है फेरी से. मतलब फेरी का मतलब होता है टू कैरी. फेरी का मतलब क्या होता है? टू कैरी. सो व्हाट इज दिस सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस का मतलब एग्जैक्टली ये होता है टू कैरी अराउंड. टू कैरी अराउंड इज सरकमफेरेंस. टू कैरी अराउंड इज सरकमफेरेंस, राइट? सरकमफेरेंस जरूरी नहीं है सर्कल का ही हो, अराउंड किसी भी चीज का हो सकता है, राइट? नेक्स्ट इज सरकमस्पेक्ट. व्हाट इज दिस सरकमस्पेक्ट? देख बाल के डिसीजन लेना. यू आर वेरी जुडिशियली टेकिंग द डिसीजन. You are very much cautious before taking the decision. I am circumspecting the situation. मैं situation को circumspect कर रहा हूं. What is this circumspect? Which means you are basically seeing the situation judicially, cautiously. That is the word circumspect. Spect is all about. और ये context कहां से आया है? To watch all around. To suspect. To suspect or to watch all around. उसको हम लोग बोलते हैं circumspection. उसको हम लोग बोलते हैं circumspection. Next is circumvention. Next is to circumvent. Right? What is this circumvent all about? आप किसी भी चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं. When you are managing the things properly. When you are managing the things properly. You are managing the things in your scope. You are managing the things in your scope is known as circumvention. इसका मतलब होता है circumvention. The next is circumscribe. What is circumscribe? Circumscribe होता है, so for example ये आपका सर्कल है, आप यहीं घूम रहे हो, right? Whatever you are doing within the prescribed rules. You are doing within the prescribed rules, which means you are scribing yourself in the circum. आप एक पर्टिकुलर रूल, पर्टिकुलर दायरे से चीजों को कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं circumscribe. To do the things as per given set of rules. As per given set of rules, उसको हम लोग बोलते हैं circumscribe. And the last is circumlocution. याद करो सर, वही तो नहीं रहता है. याद करो वो पुराने वीडियोस जहां हमने लॉक्यूशन के बारे में बात किया था, हमने कपिल शर्मा के बारे में बात किया था, हमने लॉक्वेशियस के बारे में बात किया था, हमने मेरे 4th क्लास के रिजल्ट के बारे में बात किया था, टॉकेटिव. सो सर्कमलोक्यूशन क्या होता है? गोल गोल घुमाना. जो तुम पापा अगर आपकी गलती पकड़ लेते हैं, या मोबाइल में कुछ चैट पकड़ लेते हैं, या रास्ते में कुछ करते हुए पकड़ लेते हैं, और जब पापा पकड़ते हैं, जब उनको आप गोल गोल घुमाते हो, that is circumlocution. You are not coming to the point and you are unnecessarily digressing. That is what
the circumlocution is all about. So these are the words related to circum. We are talking about circumference, circumspect, circumvention, circumscribe and circumlocution. Pause the video for a while, note these words down so that we can move further. Don't take screenshots, otherwise you won't be able to remember the words. Okay, let's see some more words. Congress, and this is the last slide before we end this video, guys. Quickly, we have done many words today, so we will see some more words. Congress, sir, a party. Yes, you are right, a party, galat nahi hai. But what exactly the word Congress is all about? Congress is basically, इसका मतलब होता है a meeting. Congress का मतलब क्या होता है? A meeting. Meeting किस तरीके की? Casual, formal और very formal meeting. ये बहुत ही फॉर्मल मीटिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं कांग्रेस. अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, इट्स अ वेरी फॉर्मल वर्ड, बहुत ज्यादा फॉर्मल वर्ड है ये, उसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस. और शायद ये वर्ड कांग्रेस पार्टी का भी इसी तरीके से आया है. द वर्ड कांग्रेस बेसिकली मींस अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स व्हिच मींस अ वेरी फॉर्मल. नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेशन. व्हाट इज दिस कॉन्ग्रीगेशन? A congregation of devotees at Mahakumbh. What is this congregation? Congregation का मतलब again होता है gathering or a meeting. Of whom? Gathering of devotees. Gathering of basically devotees जो कि religious purpose के लिए आए हुए हैं, उनको बोला जाता है congregation. उसको बोला जाता है congregation. Fastidious. What do you mean by the word fastidious? याद करो वो दिन, याद करो वो पीपीटी जहां हमने आमिर खान के लिए वर्ड यूज किया था फिनिकी, राइट, फसी. सो फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? समवन हु इज वेरी फसी, समवन हु इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स. हर छोटी छोटी चीजों के लिए जो पर्टिकुलर है, ही इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट निटी-ग्रिटीज ऑफ द थिंग्स, उसको हम लोग बोलते हैं fastidious. उसको हम लोग बोलते हैं fastidious. Let's move to the next. Neonatologist. हमने कुछ डॉक्टर्स की बात करी थी, गायनेकोलॉजिस्ट, हिपैटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन. वही वर्ड एक था नियोनेटोलॉजिस्ट जो हमने मिस कर दिया था शायद. नियोनेटोलॉजिस्ट क्या होता है? Someone who takes care, someone who takes care of newborn babies. कई बार आपने देखा होगा, हमने कई बार सुनते हैं कि बच्चा जो है वो प्री मैच्योर पैदा हुआ है. सो बच्चा अगर प्री मैच्योर पैदा होता है, उसको हम लोग रखते हैं NNICU में, which is neonatal intensive care unit, and the doctor who takes care of those newborn babies is called as neonatologist, because the word neo stands for new. The word neo stands for new. The next is zoomorphosis. I don't know if we have covered that word in the earlier videos or not. Morphosis, yes, I know we have covered, which means shape. Morphosis का मतलब क्या है? याद करो जब मैं बात कर रहा था anthropomorphosis की, which means giving human-like shape to, let's say, god and goddesses in Hindus, right? So zoomorphosis क्या होगा? Giving a animal-like shape. Giving a animal-like shape, because the word morphos is basically for shape, and zoo का मतलब हमने देखा था animal. So giving a zoo animal-like shape is zoomorphosis. Morphology, yes sir, now we know. अब हमारे को वर्ड समझ में आने लगे हैं. Morphology का मतलब क्या होगा सर? Study of shapes. Yes, बच्चा लोग आप सब सही हैं. Study of shape is morphology. You guys are right. Epidemiology, सर ये वर्ड बहुत ज्यादा आया है लास्ट 1.5 साल के अंदर. हम ये वर्ड पढ़ के थक चुके हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स. Study of epidemics, and one of the worst epidemics which hit us last year was COVID. and उसके प्रोसेस, उसका जो ब्रांच है, उसकी जो साइंस है, उसके पीछे जो लोग हैं, उसको जो स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं एपिडेमोलॉजिक डिपार्टमेंट. जब आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल बाद इस दशक की बात होगी, तो बात ये हो रही होगी कि उस टाइम एपिडेमोलॉजी के डिपार्टमेंट ने ये सारी चीजें स्टडी करी थी. दैट्स द वर्ड एपिडेमोलॉजी इज ऑल अबाउट. सेसिमोलॉजी, सेसिमोलॉजी बेसिकली मींस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जिसको थोड़े दिन पहले दिल्ली में महसूस किया गया था. सर दिल्ली में तो पता नहीं क्या क्या महसूस होता है.
सो थोड़े दिन पहले दिल्ली में जिसको महसूस किया गया था, दैट वाज सेस्मोलॉजी. स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज सेस्मोलॉजी. मोनोलॉग, राइट सर. डायलॉग तो पता है जो आप मारते जा रहे हो, मोनोलॉग वो है जो हम करते जा रहे हैं, अपने आप से बात करते जा रहे हैं, बिकॉज हम दोनों में इंटरेक्शन नहीं है. वेट करो, वो इंटरेक्शन भी हम लोग यूट्यूब पे जल्दी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आप और मैं दोनों मिलकर बात करेंगे. व्हाट इज दिस मोनोलॉग? मोनोलॉग बेसिकली मींस अ सिंगल साइडेड कन्वर्सेशन. जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं मोनोलॉग, बिकॉज I don't have anyone to talk to. That is what the monologue is all about. So the next is malnutrition. What is this malnutrition? Malus का मतलब मैंने क्या बताया था? Bad. Malus का मतलब मैंने क्या बताया था? Bad. A bad nutrition. पुराने जमाने के अंदर, मैं पुराना जमाना भी क्यों बोलूंगा, अभी भी, right? If I talk about states like Gujarat, states like Rajasthan, they are worst hit state due to malnutrition, despite of all the growth which we are seeing, probably in a manufacturing industry, probably in a telecom industry, probably in the automobile industry, but these states are worstly hit. You should go and see the data from malnutrition, because the children here are basically badly nutrition. लोग यहाँ पर badly nutrition है या under nutrition है, उनको बोला जाता है malnutrition. There is a one more word which is left, which is exodus. Right? इस exodus word के बारे में मैं मेरे 7th session के अंदर बात करूंगा in detail. That's where I have covered this word. Right? So with this, I am coming to the end of this particular session. Thanks a lot, and please do tell me in the comment section below that how you like the session, what are more changes, more words you are expected, and क्या आप और expect कर रहे हैं in vocabulary building. With this, thank you, thanks everyone, and keep watching Ekoching.